Guest of honor, Professor B.P. Sharma Sahib, former Vice Chancellor Gautam Buddha University, Noida, and patron, Pahar University. The guest of honor, we have with us Mr. Ashok Dhyanchan, ex-Olympian and Arjun Awardee World Cup winning team member. Professor K.K. Dave Sahab, Honorable President, for your gracious presence. Now moving further and inviting all the dignitaries for traditional auspicious lamp lighting ceremony as a tribute to Mother Saraswati, the goddess of knowledge. I request all the dignitaries on dais to please come forward to lit the lamp before Ma Saraswati. Mother, we pray for your blessings with all humility. Give us wisdom to make this world a better place. May all human beings live in harmony with nature and other forms of life. May the truth prevail. May the darkness of ignorance be swept away by the dawn of self-realization. Thank you, sir. Thank you. स्पोर्ट्समैनशिप की हमने बात करी थी अभी, तो क्या जितने भी प्लेयर्स बैठे हुए हैं वो अपनी प्रेजेंस शो करेंगे जोरदार तालियों के साथ सभी अतिथियों के सम्मान में, सब एक साथ. थैंक यू वेरी मच. राजस्थान राजाओं का स्थान और हमारे यहाँ कल्चर है अतिथि देवो भव. Now we extend grateful and heartfelt gratitude to all guests who, despite their busy schedule, spare their precious time. And as per the tradition of the state and city, we are going to welcome our guest with floral bouquet. First and foremost, I am inviting Professor Hemant Kothari, Chairman, University Sports Board, Pahar University, to extend welcome to our chief guest, Professor J.J. Vora Sahib. Honorable Vice Chancellor, Hem Chandra Acharya, North Gujarat University, Patan. Professor Hemant Kothari, Chairman, University Sports Board, is extending welcome to our chief guest, Professor J.J. Vora Sahib. Inviting Dr. Hemant Pandya, Secretary, University Sports Board, Pahar University, to welcome our guest of honor, Professor B.P. Sharma Sahib, former Vice Chancellor, Gautam Buddha University, Noida, and Honorable Patron of the University. आप लोग तालियां बजा सकते हैं, अपनी प्रेजेंस शो कर सकते हैं. Inviting Dr. Jogendra Singh, Tournament Coordinator, to welcome Mr. Ashok Dhyanchan, ex-Olympian and Arjun Awardee, with a floral bouquet. Request to Dilendra Hiran sir, Director Faculty of Computer Applications, Pahar University, to welcome Professor K.K. Dave, Honorable President, Pahar University. Dr. Anurag Mehta, Principal PIBS, is requested to welcome Dr. Virendra Kumar, International Handball player, with a floral bouquet. Ladies and gentlemen, Professor K.K. Dave Sahab, Honorable President, Pahar University. Ladies and gentlemen, we have with us Jaswant Singh Jadawat, Technical Committee Member, and I request Dr. Deepak Vyas to please come forward to welcome Mr. Jaswant Singh Jadawat.
सोचा नीचे से होता है। Dr. Deepak Vyas is requested to please welcome Mr. Jaswant Singh Jetawat, Technical Committee Member. Professor Hemant Kothari, Pyre University, for his welcome address. 2021-22, being organized by Pacific University Udaipur under the aegis of Association of Indian Universities. Friends, sports, particularly team sports, garner meaningful social relationships, and we all know that man is a social animal. We have a need to socially connect with others. These social interactions with our friends and workmates provide us desirable security, belongingness, and ultimately happiness. Therefore, winning or losing in sports or athletics is not at all paramount, but the happiness originating from the participation in sports or athletics is highly a cherished topic. Similarly, for good physical fitness and strength, sport is an integral part of life. Sports make our life interesting, teach us to work hard, and push our limits to high news. Sports teach discipline, respect, friendship, leadership, resilience, teamwork, and overcoming adversity. It is a crucial part of a student's growth and development. The good institutions not only aim to improve students' physical abilities, but also help them to learn a sense of good sportsmanship. With these opening remarks, I take this golden opportunity to offer my humble welcome speech on behalf of University Sports Board, entire organizing committee of this tournament, management of Pacific Group, and students. And believe that everyone present here is doing well and are super excited about this championship. Thus, at the outset, I take privilege to accord welcome and thank our chief guest, Honorable Vice Chancellor, North Gujarat University, Patan, Professor J.J. Vora, who has accepted our invitation and taken pain to travel long to be with us today. I also welcome and thank Professor B.P. Sharma Sahab, our group patron and former Vice Chancellor, Gautam Buddha University, Noida. He is a person with plethora of knowledge, and speaking something about him is just like showing toss to the sun. In the same spirit, I welcome our guest of honor, Olympian and Arjun awardee, Shri Ashok Kumar Dhyanchandji, for sparing his valuable time for the cause and to build confidence among players. I am honored to welcome Professor C.P. Bhati Saab, Director, Sports, LNICP. Along with him, I also welcome Shri Virendra Kumar, International Handball player, Dr. B.S. Sodaji, Convener Technical Committee, and all our invited guests, officials, coaches, managers, deans, directors, heads of institutions, faculty members, and administrative staff to encourage us by their benign presence on this morning. I would like to welcome and appreciate all the players of 68 teams from all 6 states of West Zone who are competing in this championship for their timely presence and can feel their passionate enthusiasm.
It seems that you all are in good spirit, joyful, and looking forward for your upcoming performances, which would begin in few minutes. Thus, wish you all best of luck in this championship. With these words, I once again extend my hearty welcome and thank each one present here for sparing your valuable time to bless and motivate us in the successful organization of this West Zone Inter-University Handball Men's Championship 2021-22. Jai Hind, Jai Bharat. Thank you very much, sir, for your kind and words of gratitude. Moving further and inviting Dr. Hemant Pandya, Secretary, University Sports Board, for a brief note on the event. Dr. Hemant Pandya. सम्मानित मंच, बाहर से पधारे हुए सभी टीम मैनेजर्स, कोच, सभी प्रतिभागी खिलाड़ियों, उदयपुर की तरह जिलों की नगरी के नाम से प्रसिद्ध है और यह त्याग एवं बलिदान की भूमि है। इस भूमि पर आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। उदयपुर की तरह जिलों की नगरी के नाम से प्रसिद्ध है और यह का आगाज 20 से 23 मार्च 2021 को किया जा रहा है, जिसमें कुल मिला के 68 टीमों की एंट्री अभी तक हमें प्राप्त हुई है और उसके आधार पर इन टीमों को 4 पूलों में डिवाइड किया गया है। चारों पूलों के मैच 4 कोड के हिसाब से किए जा रहे हैं। यह मैच जो है हमारे टेक्निकल कमेटी के जो 50 से अधिक ऑफिशियल हैं जो क्वालिफाइड रेफरी फेडरेशन के क्वालिफाइड रेफरियों के माध्यम से संचालित किए जा रहे हैं। साथ ही पूरी प्रतियोगिता का आयोजन करने के लिए हमने 16-17 विभिन्न तरह की कमेटियों का गठन किया है, उनके माध्यम से यह पूरा संपूर्ण कार्य संचालित किया जा रहा है। फिर भी इसके बाद भी अगर कमी इसमें कुछ कमी लिखे आपको तो ये मेरी व्यक्तिगत जिम्मेदारी मानते हुए मैं इसमें मेरी कमी मानता हूँ और इसकी पूरी जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। लेकिन मुझे आशा है कि आप सभी लोग प्रतियोगिता को अच्छे से एंजॉय करेंगे और इस प्रतियोगिता को सफल बनाने में आपको सभी लोग हमें पूर्ण सहयोग प्रदान करेंगे। इसी के साथ मैं अपने जो शब्द है समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। Thank you, Hemant ji, for the brief note on the tournament or the championship 21-22. Ladies and gentlemen, moving further and inviting all the guests sitting on dais, requesting Mr. Chandresh Soni, SN Powerlifting, medalist and sports officer, Pacific University, to please help in the process. All the players are requested to please stand at their respective places to honor the flags.
Thank you, sir. Thank you very much. भाई क्या कर रहा है यार? मजा हिलाओ मत अरे यार। भैया इतना थोड़ी हिलता है यार। हेलो, अरे यार इससे तो दूर रहो यार, हिल रहा पूरा फ्रेम, क्या फायदा यार। Ladies and gentlemen, we have with us Professor B.P. Sharma Sahib, former Vice Chancellor Gautam Buddha University, as a guest of honor today, who is an expert on global trade scenario, the WTO, free trade. Honorable Chief Guest of today, Professor J.J. Bora, the Vice Chancellor, North Gujarat University, the Hemchandracharya University. Patan had been cultural capital of India for pretty long period. So I welcome Professor J.J. Bora in this Pacific University campus. Honorable Shri Ashok Kumar Ji, the Vice Chancellor, North Gujarat University, the Hemchandracharya University. Patan had been cultural capital of India for pretty long period. So I welcome Professor J.J. Bora in this Pacific University campus. Honorable Shri Ashok Kumar Ji Dhyan, the Arjun Awardee and a vibrant sports person. Shri lifeline not only for students but every youth. India has the highest youth population in the world. We have almost 20% of the global youth, and therefore I think to build good health, already Subhash Sharma has also mentioned that healthy mind resides in the healthy body, and the health of the body is facilitated by games and sports. So without taking much of the time, I convey my best compliments that every student or every participant portrays best of his performance in the matches which would be going on in the next 4 days. And at the same time, I also convey my congratulations to the winning teams who would be winning various matches in these 4 days competitions. Towards the end, I again convey my best compliments that you, all the students or sportsmen, make a respectable position in the other matches to be played at the national level. So with this, I conclude and I compliment and congratulate everyone.
And I also compliment and congratulate the relentless efforts made by the team which has made this ground these 4 days events, and all the people who have participated in various activities in making this event a success. Thank you. Thank you, sir, for your kind words. And you have rightly pointed out even that the National Education Policy also recommends sports and camps activities as it helps developing balance in life. And of course, it's the lifeline. That is why 6 states and 68 teams, along with more than 800 members in the team members sitting in front of us. That is very commendable job. Moving further and inviting Shri Ashok Dhyanchand, ex-Olympian and Arjun awardee, to guide and motivate the players to play the matches with full sportsmanship. Shri Ashok Dhyanchand is an international icon who represented India in the Olympic Games twice, and the one who was a member of the team that won the bronze medal in the first World Cup in Barcelona in 1971 and silver in the second World Cup in Amsterdam in 73. He was appointed manager of the hockey team also of Indian Airlines and Air India. We are fortunate enough that we have such an eminent personality in front of we all, and I request him to please guide all the officials and the players and motivate them. मंच पर विराजमान हमारे सभी विशिष्ट अतिथिगण, नीचे चले जाओ, वाइस चांसलर महोदय और इंटर यूनिवर्सिटी हैंडबॉल टूर्नामेंट में आए हुए सभी पार्टिसिपेंट्स, कोचेस, मैनेजर्स, ऑफिशियल्स, आज के इस कार्यक्रम में मुझे निमंत्रण दिया गया। सच मानिए मुझे बहुत ही अच्छा लगा। उसकी वजह ये है कि कॉलेजेस, स्कूल्स, यूनिवर्सिटीज़ ये वो क्षेत्र हैं, ये वो जगह हैं जहाँ से हमारे देश को खिलाड़ी मिलते हैं अलग अलग स्पर्धाओं में, अलग अलग खेलों में। ये बहुत अहम जगह है। ये टूर्नामेंट जो हो रहे हैं किसी के भी, चाहे वो हैंडबॉल हो, हॉकी हो, फुटबॉल हो, वॉलीबॉल हो, इनकी अहमियत, इनकी इंपॉर्टेंस बहुत बढ़ जाती है। इसका अगला स्टेप हमारा इंडिया टीम के अंदर होता है, मैं ऐसा मानता हूँ, और होना चाहिए। मुझे याद है कि इंटर यूनिवर्सिटी का जब मैंने नाम सुना और अभी देखा इसको, तो मुझे अपना इंटर यूनिवर्सिटी टूर्नामेंट याद आ गया। कोटा, वो अगर कोटा ना होता या कोटा कॉलेज ना होता तो शायद मुझे इतने अचीवमेंट्स या खेल में जो मेरी जगह बनी है, मैं बना पाया, वो शायद ना बनती। वो अपॉर्चुनिटी कोटा कॉलेज में इंटर कॉलेज टूर्नामेंट हॉकी का हुआ 1966-67, 1966-67। उस कॉलेज के स्टार्टिंग में ग्राउंड थी और आज भी मौजूद है, बेहतरीन ग्राउंड हॉकी की। क्योंकि अगर मैं अपनी याददाश्त को ले जाऊं तो हमारे देश में 60 के दशक में, 50 के दशक में, 70 के दशक में हॉकी का बोलबाला रहा है। हॉकी एक बहुत ही बड़ा खेल रहा है देश के लिए। मानना ना मानना अलग बात है, लेकिन हम तो ये मान के चलते हैं कि हमारे देश को अगर 8 स्वर्ण पदक मिले हैं ओलंपिक के अंदर तो वो सिर्फ हॉकी के अंदर ही मिले हैं। एक से एक धुरंधर खिलाड़ी इस देश ने हॉकी में दिए हैं। सर्वोपरि मेजर ध्यानचंद, जो मेरे पिताश्री के रूप में विराजमान रहे, मेरे चाचा अंकल कैप्टन रूप सिंह, जिनके 2 ओलंपिक गोल्ड मेडल, केडी सिंह बाबू साहब 1948, किशन लाल साहब, ग्रेट बलबीर सिंह, इनके 3 मेडल्स, और एक ऐसी शख्सियत
लेस्ली क्लाउडियस साहब, जिनके 4 ओलंपिक के मेडल्स, अब 4 ओलंपिक के मेडल्स, जिसके अंदर 3 गोल्ड मेडल और 1 सिल्वर मेडल्स। ये उपलब्धियां उस स्पोर्ट से मिलती हैं जो हमारे देश का राष्ट्रीय खेल रहा है। तो मैं उस इंटर कॉलेज की बात कर रहा था कि उस इंटर कॉलेज में जब मैं गया हूं तो मेरे लिए वो टूर्नामेंट बहुत ही अच्छा रहा। 1966, 7, 67, 68, 68, 69 उस दौरान मेरा सिलेक्शन इंटर कॉलेज टूर्नामेंट में हुआ। इंटर कॉलेज के बाद राजस्थान यूनिवर्सिटी में हुआ, राजस्थान यूनिवर्सिटी के बाद ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी के अंदर हुआ, और ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी के होने के बाद मुझे एक इनविटेशन आता है मोहन बागान क्लब कलकत्ता, जो उस टाइम प्रोफेशनल लीग चलाता था, आज भी चलती है। मेरे सामने फाइनल ईयर का एग्जाम था, बीकॉम फाइनल, और मुझे वो इनविटेशन आ गया। मैं प्रॉम्प्ट नहीं कर रहा हूं, ना ऐसी बात करने के लिए बच्चों को कह रहा हूं, स्टूडेंट्स को, लेकिन मैंने वो किया कि मैंने फाइनल ईयर का एग्जाम, जो मेरे लिए कैरियर था, क्योंकि 60-70 के दशक में स्पोर्ट्स कैरियर नहीं था। आज अगर ओलंपिक में आप मेडल्स जीतते हैं, 5 करोड़ तो एक स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट करोड़ों में का खेल है। इसको हम कैरियर के रूप में हमने कभी विकसित करने की कोशिश की नहीं कि खेलों को हम किस तरह प्रोफेशनलिज्म में लाएं, किस तरह इसको कैरियर के रूप में हम स्थापित करें। बहरहाल वो फाइनल ईयर का एग्जाम मेरे सामने था, और मेरे सामने मोहन बागान क्लब का वो इन्विटेशन। मैंने मोहन बागान क्लब का रास्ता चुना, जो मेरे लिए एक अंधकार में था। मुझे नहीं पता था कि मैं वहां जाके कितना अच्छा खेल पाऊंगा या नहीं खेलूंगा, मेरा जीवन कैसे आगे चलेगा। लेकिन मैं जब पहुंचा हूं, वो जो जाना था मेरा, वो मुझे अपने ऊपर विश्वास के ऊपर, मेरी उस प्रैक्टिस के ऊपर, मेरे उस खेल के ऊपर जो मैंने अपने प्रैक्टिस से हासिल किया था। और ये सब चीजें हासिल कब होती हैं, हम शायद सभी जानते हैं। कोई सा भी क्षेत्र हो, अगर उसके अंदर आपका डेडिकेशन ना हो, आपका कमिटमेंट ना हो, आपकी तपस्या ना हो और सेक्रीफाइस ना हो, तो ये चीजें हासिल नहीं होती हैं। मैंने वो स्टेप लिया। मैं जब पहुंचा हूं तो मेरा पहला मैच ही मेरे लिए इंडिया के एशियाड में शामिल होने का उसने दरवाज़ा खोल दिया था। वहां मैं खेला हूं, मेरा अच्छा प्रदर्शन रहा, जिस वजह से मैं क्लब खेलने गया था। टूर्नामेंट जीते हमने, और मेरा सिलेक्शन 1970 एशियाड के लिए हुआ है। बैंकॉक में हम खेलने गए हैं। तो इस तरह से ये मेडल्स बढ़ते चले गए, मेरा खेल बढ़ता चला गया, मेडल्स की टैली बढ़ती चली गई। लेकिन असली चीज़ हॉकी के अंदर, जो आज भी मैं जानता हूँ, सारे देश के लोग जानते हैं कि हमको सिर्फ गोल्ड की ज़रूरत है, सोने की ज़रूरत है। 41 साल के बाद हमारे पास पिछले ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल आया हॉकी में, तो देश ने पलकें बिछा दी। स्वागत सम्मान हमारे हॉकी का हुआ, हमारे खिलाड़ियों का हुआ। प्रधानमंत्री जी ने और सभी हमारे देश के राज्य मंत्रियों ने, स्टेट मंत्रियों ने बड़े खुले दिल से स्वागत किया हर खिलाड़ी का। तो मैं चाहूँगा कि ये जो इंटर कॉलेज टूर्नामेंट आप खेलने आए हैं, इसके अंदर अपनी पूरी लगन, मेहनत और जो काबिलियत आप रखते हैं, जितना टाइम आपके पास में, जो मैच टाइम होता है आपका, उसके अंदर वो खेल को दिखाकर उसको आप अपने यूनिवर्सिटी के लिए अच्छे रिजल्ट के रूप में उसको चेंज करें, उसको बदलें। हैंडबॉल हमारे देश में इन दिनों में बहुत ज़्यादा विकसित हो रहा है, नई ऊंचाइयां छू रहा है। और मैं चाहूँगा कि इस तरह के खेल जो हमारे देश के मैं कहूँ कि परिस्थिति के अनुकूल भी हैं, इसके अंदर कोई ज़्यादा ग्राउंड या ज़्यादा इक्विपमेंट की ज़रूरत नहीं है, सिवाय फील्ड के जो इसका ग्राउंड बनता है
वो मुताबिक होना बहुत ज़रूरी है। और मैं बैठा अभी बात भी कर रहा था सोडा साहब से कि हमारे ये जो एक बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती हैं यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, कॉलेज के अंदर, स्कूलों में, शायद अभी भी हमारे बच्चे इन बातों से महरूम हैं। हमको इनको विकसित करने की आवश्यकता है। ये बच्चे तो करने के लिए बैठे हैं कि हमसे आप कुछ कराएं, हम करने के लिए बैठे हैं। तो मैं चाहूँगा कि इस तरह की चीज़ें हमारे देश में प्रचलन में जल्दी आएँ, जो हम देखते हैं तो हमेशा बाहरी मुल्कों की बातें करते हैं कि उनके पास ये चीज़ें, उनके जितने मेडल्स हैं, लेकिन उन्होंने मेडल्स को हासिल करने के लिए कितनी चीज़ें विकसित की हैं, कहाँ उन्होंने अपने बच्चों को सुविधाएं दी हैं, ये सब हमको जानने की ज़रूरत है। अगर ये सब चीज़ें हम करना शुरू करें तो आने वाले 2-4 वर्षों के अंदर हमारे ये बच्चे जो आज इंटर यूनिवर्सिटी खेलने आए, ये कमांड यूनिवर्सिटी खेलेंगे, कमांड के बाद इनके इंडिया के अंदर सिलेक्शंस होंगे। तो मेरा कहना यह है कि बच्चों, अपने ऊपर विश्वास रखो, लेकिन अगर आप सीरियसली ले रहे हैं तो ज़रूर उस खेल को खेलो। ये अब वो खेल नहीं है कि जिसमें मेरे पिता मुझे मारते थे कि हॉकी नहीं खेलनी है। क्यों? वो कैरियर नहीं था, उसमें जॉब्स मिलना मुश्किल थे। लेकिन आज आपके सामने बिल्कुल ओपन है। अगर आप स्टेट खेलते हैं, नेशनल्स खेलते हैं, इसमें भी हमको कुछ स्लैब्स बनाने चाहिए। हमारे देश में स्पोर्ट्स के अंदर नेशनल खिलाड़ी को इतना पैसा मिलना चाहिए, स्टेट लेवल को इतना मिलना चाहिए। राज्य सरकारें कर रही हैं इस बात में, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से भी इसका होना बहुत ज़रूरी है। मैं चाहूँगा ये चीज़ें ज़रूर हों, ताकि हमारे बच्चे जो इस वजह से कहीं रुक जाते हैं कि उनका भविष्य कहीं खराब ना हो जाए। जो शिक्षा तो सर्वोपरि है, अहम है। बिना ज्ञान के हम कुछ नहीं है, बिना पढ़ाई के हमारे पास हम कुछ हासिल नहीं कर सकते। शिक्षा के साथ साथ खेलों को भी हम उतनी मान्यता दें तो आने वाले वक्त में हमारे देश के अंदर जो भी मेडलों का गिनती इस ओलंपिक में बढ़ी है, 7 मेडल्स मिले हैं, ये बढ़कर 70 मेडल्स हमारे पास आने चाहिए इतने बड़े मुल्क में। जैसा कि कहा अभी शर्मा जी ने कि 20% हमारा यूथ है हमारे पास में, तो वो यूथ को हम क्यों ना इस खेलों में शामिल करें, ताकि आने वाले वक्त में हमारे पास ओलंपिक के अंदर जहाँ देश का झंडा माथा ऊपर होता है, उसको हम ऊपर करने की कोशिश करें। और करने वाले सामने हमारे ये बच्चे, हमारे खिलाड़ी बैठे हुए हैं। मैं चाहूँगा कि इनके सुखद भविष्य की कामना करें हम सभी, और एक अच्छे टूर्नामेंट के रूप में आज ये इंटर यूनिवर्सिटी हैंडबॉल टूर्नामेंट जो खेला जा रहा है, इसके अंदर हर खिलाड़ी अपना सर्वोपरि सबसे अच्छे टूर्नामेंट के खिलाड़ी के रूप में अपने खेल को जाकर यहाँ से निकले। मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि मुझे मंच पर बुलाया गया। मैंने शायद ज़्यादा ही बोला है, वो सिर्फ इसलिए कि बच्चों कि हमारी बाकी बातें अलग है, हमारा जो डायरेक्ट कनेक्शन खिलाड़ी के रूप में होता है वो आपसे है। आप अपने को फिट रखें, अपने को अपने खेल के अनुकूल ढालने की कोशिश करें। आप देखेंगे आने वाले वक्त में जो कमियां आपके अंदर हैं उसको आप अगले टूर्नामेंट में दूर करें और अच्छे खिलाड़ी के रूप में अपने आप को साबित करें। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच मुझे यहाँ इन्वाइट करने के लिए। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद अशोक जी, आपने बिल्कुल वाजिब फरमाया। और जो बातें आपने कही, प्रैक्टिस, डेडिकेशन, कमिटमेंट, सेक्रीफाइस, ये वो कैरेक्टरिस्टिक्स है जो एक प्लेयर को जन्म देते हैं। और अगर ये आप में सब में है तो आप मान के चलिए मेडल की जरूरत नहीं, आप वैसे ही सक्सेसफुल पर्सन है अपनी लाइफ के अंदर। Ladies and gentlemen, it is rightly said, successful people maintain good habits that go hand in hand with success in every area of endeavor, which develops a reputation. The way one works determines the quality and quantity of rewards. Amidst us, we have one such great person today. Yes, we now request our Honorable Chief Guest, Professor J.J. Vora Sahib, Honorable Vice Chancellor Hemchandra Acharya, Gujarat University, Patan, a person who hardly needs any introduction. He has made all of us proud of his distinguished work in numerous capacities, making the fraternity proud. He is the sculptor of academic milestone who has attended numerous national as well as international conferences and brought laurels for the country. A very humble personality to address the gathering and declare the event open. Professor J.J. Vora Sahib.
at the outset, first of all, I wish a very happy morning and a very, very happy, healthy and eventful beginning of the handball men's competition West Zone tournament. So I declare the tournament open, and let us clap for the opening of the tournament. I am very much thankful to Pacific University for inviting me to address a gathering of the youth of our country. West Zone and more than 60 teams have arrived here, and I wish the best candidate wins, the best team wins the tournament. I would like to congratulate first of all, and first and foremost thing, that we all are very much thankful to God who has made these type of tournaments, physical tournaments possible this year. If you remember the situation of last year, due to Corona, it was not possible to hold such type of physical events where we have to play physically, but this time it has become possible to held this type of events, and I hope that all of you will be performing in your best possible physical capabilities. At the outset, I would like to know from you who is willing to go to Olympics. Can I listen to your voice? Who wants to go to Olympics? Anybody willing to games? Yes. I could not listen. Can you repeat? Okay, so I wish the person who works very hard is sure to participate and of course win the Olympic Games. In that I recollect the performance of Emil Jetopek, who was a winner of Olympian gold in several tournaments at a time. He was a recipient of gold in marathon, 10,000 meters, 5,000 meters and so on and so forth. If you go to consider his achievement, it will be a very long list. So when the sports persons who are participating in Olympics, when they were together, they asked each and every sportsman how they worked. So somebody said, I practice it 2 times in the morning, 2 times in the evening. The other sports person said that I work for 3 times in the morning in the ground and 3 times in the evening. Jetopek was silent. Then somebody asked Emil Jetopek, please you tell us how much practice do you make? Initially he hesitated, but then he said that 3 times in the morning, 3 times in the evening. But people were skeptical. You cannot win Olympic gold in so many events. Then he said, when he started his journey from his house to his office, he used to run for 3 hours while reaching his office, and again in the evening also, when he returned back from his office to his home, he once again used to run for 3 hours.
he selected a long way. So you can imagine 6 hours practice off the ground, and on the ground he was practicing almost equal to other sports persons. And these hard work fetched him a number of Olympic gold medals. And friends, what I have to say, that you have to work very hard in order to get your success in the handball or whatever you select as your profession. As our ground is right now very fortunate that we have an Olympic medal winner, and you can clap for him also, being Olympic medal winner. So one thing, of course, using your medical guidance, you can see is a concept of hypoventilation. This technique helps you to increase your endurance, but you have to do it strictly according to the advice of your medical practitioner. And please be sure, even I have seen the old photographs that marathon runner is running without any kind of shoes in his feet. So this is how medal winners practice, and I also would expect that our country, which it was said earlier that we are having highest number of youth in our country. Some of you can be the sports persons and winner of awards in the field of sports. So with this brief speech, I would once again thank the organizers for inviting me to address you, and I wish that the best sport persons, their team wins, and the team players go ahead in your career and play for the nation and play in the true spirit of sports. So thank you one and all. Thank you. Friends, I am reading the grand opening of this event. I, Professor J.J. Bora, declare the West Zone Inter-University Handball Men Championship organized by Pacific Academy of Higher Education and Research University 2021-22 open. Thank you, sir. Thank you very much for to charge the players by your exuberant and motivational words. We really appreciate that your words of appreciation, your words and blessings. I, on behalf of the management, accord a big thank for your time and words of wisdom. Means a lot to all of us. Ladies and gentlemen, moving further, and inviting Mr. Prasenjit, Captain Host University, to please come forward for the oath-taking ceremony. Oath will encourage fidelity to the extent that continues to believe that one cannot escape ultimate accountability for a breach of faith. Mr. Prasenjit, Captain Host University, to please come forward. Good morning all the players. आप सभी से निवेदन कि प्लीज अपनी अपनी जगह पे एक बार खड़े हो जाएं शपथ समारोह के लिए।
और अपना हाथ बिल्कुल स्ट्रेट कर ले इस तरीके से। Good morning, all the players, our respected coaches, managers, and our chief guest. We swear to take a part in the West Zone Inter-University Handball Man Championship. We shall respect and follow the rules and regulations that given the desire to participate. We shall play with team spirit of sportsmanship for the honors of our university and for the glory of sports. Thank you. Thank you, Prasenjit. Please be seated. Moving further and inviting Professor K.K. Dave, Honorable President, Paya University, who is very humble, down-to-earth and very vibrant personality, under whose guidance the university is flourishing leaps and bounds, for his presidential address. Professor K.K. Dave Sahab. All the players may please be seated. Today's chief guest, Honorable Vice Chancellor, Professor J.J. Vora, Hemchandra Acharya, North Gujarat University, Professor B.P. Sharma, our patron, Group President of the Pacific Group, Professor Hemant Kothari, Chairperson, Sports Board, Pacific University, Dr. C.P. Singh, Sports Board Chairperson, NNIT Gwalior, Vinay Singh Sir, V.S. Soda Sahab, respected Ashok Dhyanchand Sir, Joginder Sir, Hemant Pandya Sir, our Registrar Sharad Kothari Sir, Dean Directors, faculty members, all the participants, managers of all the state, all the teams, पैसिफिक यूनिवर्सिटी के इस प्रांगण में आप सभी का हार्दिक स्वागत. गुड मॉर्निंग, वार्म ग्रीटिंग टू एवरीवन. हाउ इज द जोश? प्लेयर्स, हाउ इज द जोश? हाउ इज द जोश? हाउ इज द जोश? Great. Please maintain this josh in 3 days and enjoy the games. भारत रत्न सचिन तेंदुलकर वो हमेशा यही कहते हैं कि मैं गेम को हमेशा एंजॉय करता हूं, और आप सभी लोग इन 4 दिन के महाकुंभ में पूरी तरह से एंजॉय करें. विनिंग और लूजिंग इज ए डिफरेंट पार्ट. जैसे सर ने बोला, वोरा साहब ने बोला अभी कि जो अच्छी टीम है वो जीतेगी, लेकिन अपने एफर्ट्स हमेशा करते रहना चाहिए. और आप हर पार्ट को, जब आप हर मोमेंट को जो आप जी रहे हैं अभी इसी वक्त, उसको एंजॉय करते हुए खेलें. मेरे ख्याल से आपको बहुत आनंद आएगा. कोरोना का टाइम निकल चुका है और जो पॉजिटिव वाइब्स हम लोग महसूस कर रहे हैं आज की तारीख में इस पैसिफिक यूनिवर्सिटी के प्रांगण में, वो मेरे ख्याल से बहुत अच्छा संदेश दे रही है हमें कि अब हमारे लिए हर क्षेत्र ओपन हो गया है. हम हर क्षेत्र के अंदर अपना पहचान बना सकते हैं. और इंटर यूनिवर्सिटी हैंडबॉल प्रतियोगिता भी आप में से कोई अच्छा विन करके जाएगा, जिसमें से एक अच्छा प्लेयर नेशनल लेवल पे प्ले करेगा, एक अच्छा प्लेयर ओलंपियन बनेगा. मैं आप सभी लोगों को बहुत सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूं. आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, मुझे पता है. और मैं पैसिफिक यूनिवर्सिटी के स्पोर्ट्स बोर्ड को भी बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि बहुत कम समय के अंदर 7-8 दिन का हमें जो टाइम मिला, उसके अंदर आप देख रहे हैं कि जिस तरह से तैयारियां की गई हैं, वो मेरे ख्याल से एक अपना आप में एक उदाहरण है. ये सब सारे स्पिरिट जो हैं वो हम इस प्रोग्राम को सफल बनाने के लिए
जिस टीम ने इस तरह से एक सराहनीय काम किया है उनके लिए मुझे लगता है कि अपन सब लोग मिलकर क्लैपिंग करना चाहिए। कंटिन्यूस 7 डेज से मैं देख रहा हूं, दिन रात मेहनत करके आज स्टेज पर हम लोग पहुंचे हैं जहां पर हम इस प्रोग्राम को बहुत अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज कर रहे हैं और आपके सामने एक बहुत अच्छा इनॉग्रल सेशन आपके सामने अभी हुआ है, जिसके लिए मैं बहुत बहुत सारे स्पोर्ट्स बोर्ड की पूरी टीम को धन्यवाद देना चाहूंगा। प्लेयर्स, आप सभी का वंस अगेन स्वागत है। आप बहुत मेहनत करें और विनिंग पोजीशन पे आए। आपको सभी को शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच। Thank you, sir. Thank you very much for your kind words. There's an announcement. Officials, managers, coaches and players of Pahar University versus Kadisarva Vidyapit University, Gandhinagar to reach court number 1 for the match. And I request all the distinguished guests, dignitaries on dais to please proceed towards the court number 1 to begin to start the match. I once again request all the officials, managers, coaches, players of Pahar University and Kadisarva Vidyapit University, Gandhinagar to reach at court number 1 for the match. साला कॉल आ रहा है, कल कराना पड़ेगा। हाँ किसको
जगह तुम संभाल रहे हो ना? संभालने क्या, दोनों जगह जाना है वो। बॉल बाहर गई। ऐसे कैसे फेंके हुए बॉल बाहर चली गई। आ रही यार, आंखों में धूप लग रही है यार। धूप तो लगेगी, देख ही नहीं रहा अभी। क्या हुआ? इसका बबल नीचे का नहीं घूम रहा। घूमा नहीं घूमा? ट्राइपॉड भी ऐसी कैसी बार रखी सारी भी। अरे ये ऐसे ही उनके सारे ट्राइपॉड तो कुछ सब ऐसे ही चल रहे हैं। बड़ी बात है, चल रहे हैं, बड़ी बात। ये गिरेगा तो नहीं? ये देखो ऊपर गिर जाएगा ये तो। हाँ? अच्छा मैं चेक कर रहा था इसका। चाय है? हाँ? चाय है क्या? चाय है किसमें? किसमें? किसमें रखी जो नीचे? पता नहीं क्या है। जुगाड़ में तो मास्टर हैं। एक मेरे को भी दे दो डंडा।
हेलो यूनिवर्सिटी अलवर वर्सेस जयनारायण व्यास यूनिवर्सिटी जोधपुर बीच होने वाला मैच। नेक्स्ट मैच सभी ऑफिशियल से निवेदन है कि वो दोनों टीम को लाइनअप कराएं। साथ ही इस मैच के अंदर इंट्रोडक्शन करने के लिए बना रहेंगे श्रीमान कृषि व्यास साहब, डायरेक्टर ग्रीन फिजिकल ग्रीन एजुकेशन। साथ में ही भूपेंद्र सिंह जी सोड़ा और उनको एस्कॉर्ट करेंगे डॉक्टर जोगेंद्र सिंह। सर आपसे निवेदन है कि आप इनका एस्कॉर्ट करें। कोर्ट नंबर 3 पर यह मैच समाप्त होने के पश्चात नेक्स्ट मैच में भरत हरी ऋषि अलवर यूनिवर्सिटी वर्सेस जयनारायण व्यास यूनिवर्सिटी जोधपुर के बीच होने वाले मैच के लिए दोनों टीमें रेडी हो जाएं और ऑफिशियल से निवेदन है कि उनको लाइन अप कराएं ताकि गेस्ट को लेके उनका इंट्रोडक्शन कराया जा सके। हेलो, राजऋषि भारतरी अलवर वर्सेस जयनारायण यूनिवर्सिटी जोधपुर का मैच कोर्ट नंबर 3 पर। मैच राजऋषि भारतरी अलवर वर्सेस जयनारायण यूनिवर्सिटी जोधपुर कोर्ट नंबर 3 पर जल्दी से जल्दी रिपोर्ट करें।
कोर्ट नंबर 3 पर नेक्स्ट मैच के लिए दोनों टीमें लाइनअप कराएं। कोर्ट नंबर 3 के ऊपर आज के हमारे नेक्स्ट मैच के गेस्ट हैं श्रीमान खेल शंकर जी व्यास साहब, डीन एंड डायरेक्टर एजुकेशन। साथ ही उनके मुख्य और अतिथि हैं भूपेंद्र सिंह जी सोढ़ा साहब, और इनको एस्कॉर्ट करेंगे डॉक्टर जोगेंद्र सिंह जी। कोर्ट नंबर 3 पर दोनों ही टीमों के इंट्रोडक्शन के लिए श्रीमान खेल शंकर जी व्यास साहब, भूपेंद्र सिंह जी सोढ़ा साहब और भूपेंद्र सिंह जी चौहान प्रिंसिपल BNCP तीनों ही गेस्ट पधार रहे हैं, जो कि उनका परिचय लेंगे। उनको एस्कॉर्ट कर रहे हैं डॉक्टर जोगेंद्र सिंह जी। हाथ आ रहा है यार, हाथ आ जाता है।
आगे यार पूरी कैमरा को दिख नहीं रहा, बंद करा फ्लैश। GTU बांसवाड़ा, गुरु गोविंद ट्राइबल यूनिवर्सिटी बांसवाड़ा के टीम मैनेजर तथा कोच से निवेदन है कि अपना रजिस्ट्रेशन करा लें पहले। बिना रजिस्ट्रेशन के आप मैच खेलने आएंगे तो डिस्क्वालीफाइंग कर दिए जाएंगे यहाँ पे। साथ ही SGGU गोडवाना गोधरा, SGGU गोधरा गुजरात यूनिवर्सिटी आप